Hello my dear loving students. Today we are going to discuss about the one application in matrix. That application is called the solution of system of linear equations, and you can solve with this matrix method solving of linear equation of two variable and solving of linear equation of three variables. Means linear equation, simplification of linear equation you know very well in the earlier classes, like x plus 3y is equals to 5 and 2x plus 6y is equals to 8, for example. And you know how to solve this linear equation in class 9th. You can use the eliminating method or the substitution method, graphical method, and in NCERT another method is written in like cross multiplication method. But now using of matrix we can solve this linear equation also. It is an application of matrix basically. So you can solve the two variable equation, linear equation of two variable, and you can also solve the linear equation of three variable. You can also solve the linear equation of four variable, or you can also solve the linear equation of nth variables. So matrix method is a standard method. So how to apply this method? First we learned about how to apply this method and how to solve the question, and after that give some important condition. The condition is related to the consistency or inconsistency of the question. So first we see about the solution of this equation using of matrix method. First matrix formed using of the coefficient of x and y, like the coefficient of x is 1, the coefficient of y is 3, the coefficient is again 2, and the coefficient of this 6. And the next is use of x and y, means arrange the variables x and y. If you multiply 1 3 into x and y, you can again form the x plus 3y, and that is equal to 5 and 8. And after that, suppose that matrix be suppose A and variable B, suppose x is equals to the variable of this one is B. So x is equals to, you can say A inverse B, right? Means divided by A. और divide तो possible होता नहीं, matrix में होता ही नहीं कोई rule. So we are saying multiplied by A inverse on both side, and then x equals to A inverse B. Basically with the help of this formula we can find out what exact our need. Our need is to find out the inverse of this matrix and then multiplied by this B. So first find out this A inverse. A inverse is adjoint of A divided by the determinants of A. First to find out determinants of A, 6 1s are 6 and 2 3s are 6. So fortunately or unfortunately, it is a determinants of A is equals to 0, shows it is a condition of inconsistent, means you can't solve the question further. इनकन्सिस्टेंट सॉल्यूशन, बिकॉज अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट कि सॉल्यूशन शुड बी द कंसिस्टेंस. ओके, मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 मीन्स सॉल्यूशन इज इनकन्सिस्टेंट. सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशन. नाउ टेक द अनदर एग्जांपल and then see what exactly the value of x and y. So the another question is, okay, next example is 3x. First write down the question. 3x plus 4y, and see the correct question. After that we can say that is the right question. Yes, 5x. अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो हम फिर से कोई ऐसा क्वेश्चन लें और जिसमें कंसिस्टेंट आए ही नहीं. 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 2 एंड 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3. नाउ अरेंज द कॉफिशिएंट. 5 माइनस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाइड 5 5 ज़ा माइनस 25 एंड प्लस 7 7 ज़ा 49. ओके, द सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा x and y, and that is a 2 and 3. Now again method is again
the same one, A into X is equals to B. So we need X equals to A inverse B, equation 1. So we need to find out A inverse. So first find out the determinants of this. 5 5s are 25 minus sorry 7 7s are 49. So 9 minus 5 is 4, 4 minus 2 is 2. So determinants of A is equals to 24. And now find out adjoint of A. So adjoint of A के लिए पहले हमें चाहिए कोफैक्टर्स, ठीक है, और 2/2 के लिए adjoint of A हमने बताया था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. एक डायगनल में आप यू कैन चेंज द वैल्यू इन द वन डायगनल -5 and 5, and the second diagonal you can change the sign. So adjoint you can find out directly. -5 7 and -7 5. Now A inverse is adjoint of A divided by determinants of A. So 1/24 -5 and 7 -7 and 5. Now X is equals to A inverse 1/24 -5 and 7 -7 and 5, and B is 2 and 3. X equals to 1/24. Now multiplied, 5 2s are 10 minus 10, 7 3s are 21 plus 21, and 7 2s are 14 minus 14, and 5 3s are 15. So 1/24, 21 and minus 10, that is an 11, and 15, this is 1. Now X is equals to what exact? X and Y. And after that, and the last step, you can compare 11/24, 1/24. Now you can compare X equals to 11/24 and Y is 1/24. Now it is a method how to solve the linear equation using of matrix method, right? And after that we can discuss about the conditions. लीनियर इक्वेशन है तो 3 कंडीशंस बेसिकली हमारे पास बनती हैं. वो कंडीशन क्या बनती है, आइए ज़रा देखते हैं हम इसके लिए, कि कंडीशन इज़ कंसिस्टेंट और कंडीशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट. स्टार्टिंग फ्रॉम होता है, फाइंड करेंगे पहले, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, एंड देन यहाँ से 2 केस अराइज होते हैं. नाउ द 2 केसेस आर, द फर्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन से consistent, the very first part, consistent, right? And unique solution. The meaning of unique solution you know very well. We can find out only one value of X and Y. And what about in this case, if determinants of A is equals to 0, then we need to check the 2 condition again. The first condition is adjoint of A multiplied B find out करेंगे in both of the cases. Adjoint of A multiplied by B. If adjoint of A multiplied by B is equals to 0, right? So again say the consistent. अभी मैंने ऊपर इसलिए रोक दिया था कि inconsistent बोल दिया था क्योंकि ये conditions हमने नहीं बताई थी. तो वो फॉर्चुनेटली क्वेश्चन ऐसा हमने ले लिया था जो पहली कंडीशन में आ गया. अदरवाइज आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इफ इक्वल्स टू 0, देन नीड टू चेक एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी. ये हमें चेक करना होगा. सो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल्स टू 0, द कंडीशन इज अगेन कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, बट द सॉल्यूशन इज, वी कैन से, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. Infinitely many solution. And in this case again ये वर्ड यूज यहाँ हो जाएगा, is not equal to 0. अब कंडीशन आती है, दैट इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट.
and the single line is no solution. So in the previous example हमने चेक नहीं किया था, जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है एडजॉइंट ऑफ व्हाट अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है। बट मैंने उस क्वेश्चन को वहीं एज इट इज़ रोक दिया था कि चलिए पहले तो वो कंडीशन, अभी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की कंडीशन ये बन गई है, तो मैंने इनकन्सिस्टेंट कह के उसको रोक दिया था। अदरवाइज वी नीड टू चेक इन दिस पार्ट ऑल्सो कि एडजॉइंट ऑफ ए विद बी इज इक्वल्स टू, अगर ये इनकन्सिस्ट होगा तो नॉट इक्वल टू 0 बनेगा। राइट, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि अभी हमने कंडीशन नहीं बताई थी। तो मैं कम टू द नेक्स्ट वेरी सेकंड एग्जांपल। सो you can follow these properties and rules and you can attempt the whole exercise. The whole exercise is a easy one, and always remember the 6 marks question is coming from this exercise always in exams, or the equation is maybe the 2 variable form or the 3 variable form. In the next video we will discuss about the 3 variable form, but you can solve the 3 variable also using the same approach. Thank you.